Hello students and welcome back. In this video we are going to learn about some of the different types of simple machines and we are going to discuss their mechanism and how they work. Alright, so the first type of machine that we are going to discuss is a lever. In order to discuss this, we are going to actually take an example of seesaw. Alright. Everyone have seen a seesaw in a park and they have already, you guys might have already used it as well. So a lever helps to raise or lower a heavy load. ठीक है? हेवी लोड कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी भारी चीज को या तो रेज यानी उठाने के लिए या उसको नीचे रखने के लिए यूज होता है. इन दिस पिक्चर सी सॉ में हैवी लोड कौन कौन सी चीज़ें हैं. दीज टू चिल्ड्रन दैट आर सिटिंग ऑन द सी सॉ, इनको हम क्या कहेंगे, दे आर हैवी लोड्स. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा जी, तो लेवर में होता क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार और अ रॉड दैट रेस्ट. ठीक है, ये क्या होता है, इसमें एक रिजिड बार या एक रॉड होता है. ठीक है, यू कैन सी दैट द टू पीपल आर सिटिंग ऑन इट. तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक रिजिड बार है. एंड इट मूव्स ऑन अ सपोर्ट कॉल्ड फल्क्रम. If the person is going down, it's raising or it's getting lowered, it's because of this thing that is in the middle, जिसके ऊपर ये rod है. And that rod is actually getting support from this object जिसको हम क्या कहते हैं, fulcrum कहते हैं, right? This specific object is giving them, um, you know, the place to move either up or down. ठीक है. The force which is applied to do the work is called the effort. ठीक है. If this specific child is actually going to push the feet on the ground, it's going to raise upward, right? And this one is going to come downward. तो ये जो इन्होंने पुश करने के लिए फोर्स अप्लाई की थी, उस फोर्स को हम कहते हैं एफर्ट. उसको हम क्या कहते हैं, एफर्ट कहते हैं. ऑलराइट, the force that is being applied by this child to get up in the air or to rise in the air, it's called the effort. The object that is moved or lifted is called the load. इस बच्चे की वजह से if the other child gets up in the air, तो that is called what, that is called the load. तो हम इस वाले बच्चे को क्या कहेंगे कि ये क्या है, it's a load. ठीक है, he is applying the effort or she is applying the effort and the load on the other side is getting upwards. ठीक है. Some examples of simple levers are bottle opener. ठीक है, bottle opener या can opener, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, these are the example, very simple example of levers. ठीक है, और ये levers जो हैं, that is a machine that use the specific kind of mechanism जो मैंने अभी आपको explain किया है, जिसमें हम एफर्ट यूज़ करते हैं, जिसमें हम फुलक्रम यूज़ करते हैं, जिसमें एक रिजिड बार होता है जो हेल्प करता है आपको इन रेजिंग, in rising or in lowering down the heavy load. Right, I hope you guys understand this. Let's move on to the next slide and learn about inclined plane. So inclined plane is another type of simple machine. और एंड हाउ डज इट वर्क, इसमें ये होता है कि इंक्लाइन प्लेन हैज़ अ स्लांटिंग सरफेस. स्लांटिंग सरफेस का मतलब ये होता है कि वो ज़रा टेढ़ा सरफेस होता है. ठीक है, इट इज़ हायर एट वन पॉइंट, यू कैन सी ओवर देयर, ये हायर होता है, एक पॉइंट से हायर होता है, राइट. एंड इट इज़ लोअर ऑन द अदर एंड, और दूसरी साइड पे इट इज़ एक्चुअली लोअर. ठीक है, दिस इज हायर. तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इट्स एन इंक्लाइंड प्लेन. इट हेल्प्स टू मेक it easier to roll objects from lower to higher और higher to lower surface. इससे क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल करके जो है, इट यू कैन मूव इट
either upwards or you can move it either downwards, जिसमें हमें इतनी फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती, बजाय इसके कि आप वो हैवी ऑब्जेक्ट उठा के ऊपर रखें, that would require a larger amount of force. You can use the inclined plane to roll down the objects onto the higher surface. All right. So the some example of inclined plane are a ramp and you can say a sloping road. ठीक है, कोई रोड जो है if it's an inclined plane mechanism तो क्या होता है कि your car can get down really fast. Okay, so that is also an example of inclined plane. That is a simple machine we use in order to apply less force and do our work more effectively. See you guys in the next video.